Hello everyone, this is my fourth video on revision classes of elements of machine design and theory of machine. So in this video I am going to explain about unit 5, that is transmission of power. This video will going to help you to study and understand the concepts clearly regarding transmission of the power. I hope you all going to refer this video for study. Okay, let's start with introduction. So here the transmission of power means the power is to be transmitted from one device to another device through the other sources, like whether it may be belt, rope and chain drives. So here the belt or ropes are used to transmit the power from one shaft to another, okay, by means of pulley which rotates at the same speed at different speed also. The amount of power transmitted depends upon the following some factors. Those factors are velocity of the belt, the tension under which the belt is placed on the pulleys, the arc of contact between the belt and the smaller pulley, and the condition under which the belt is used. So these are the some factors which depends on the power is to be transmitted from one shaft to another shaft. These are the factors which affects, okay. So henceforth belt drives plays very important role while transmitting the power from one shaft to another shaft. So here, while selection of the belt drive, some following are the various important factors which are to be considered while selection of the belt drives. So some factors which are very much important while selecting the belt drives, which are: first one, speed of the driving or driven shaft, okay, speed is very much important. Power to be transmitted, that is important. Third one, positive drive requirements, space available, speed reduction ratio, center distance between the shaft, shaft layout, service conditions are the some important factors while selecting of the belt drives. So in exam he may ask which are the factors for selection of the belt drives. So you have to go through these factors. So the next point is types of the belt drives. So there are three types of the belt drives: light drives, medium drives and heavy drives. But according to our usage we are going to consider, okay. So here types of the belts broadly classified into three types. First one is flat, V belt, circular belt. Like three belts we are going to consider. So flat belt mostly used in the factories and workshops where a moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another pulley when the two pulleys are not more than 8 meters. Then V belt is mostly used in the factories and the workshops where moderate amount of power is to be transmitted from one pulley to another pulley when the pulley are very much nearer to each other. So when nearer to each other, at that time we are going to assign V belt drive. And third one is circular belt or rope, is mostly used in factories and workshops where greater amount of power is to be transmitted. So this circular belt drive are to be employed when greater amount of power is to be transmitted from one pulley to another pulley when the two pulleys are more than 8 meters apart.
point, materials used for the belt drives. So which type of material will going to use while making the belt drives? First one is leather. Through the leather only we can make a belt drives. Next, cotton or fabric belts, rubber belt and balata belts are to be used, through which we can easily make a belt drives. Next point, slip of the belt. This is important factor in the belt drives. What is mean by slip? Means the motion of the belt and the shaft assuming a firm frictional grip between the belts and the shaft, but sometimes the frictional grip becomes insufficient. This may cause some forward motion of the driver without carrying the belt with it. This may also cause some forward motion of the belt without carrying the driven pulley with it. This is called slip of the belt, and generally it is expressed in terms of percentage. Next, grip of the belt. When the belt passes from the slack side to the tight side, certain portion of the belt extends and it contracts against when the belt passes from the tight side to slack side. Due to these changes of the length, there is relative motion between the belt and the pulley surface. This relative motion is termed as grip. These two terms are very much important. So in exam the definition may he ask slip and grip of the belt. So next point is centrifugal tension. Since the belt continuously runs over the pulley, therefore some centrifugal force is caused, whose effect is to increase the tension on both tight as well as slack side. The tension caused by the centrifugal force is called as centrifugal tension. So in the notes given the derivation, you have to go through that. Okay, in exam he may ask the definition centrifugal tension as well as the derivation. So at the same time you have to refer the maximum tension in the belt also. It is given in the notes clearly. Next, moving to the next point, that is V-belt drive. Next belt drive is V-belt drive. V-belt drive is mostly used in factories and the workshops, where a great amount of power is to be transmitted from one pulley to another when the two pulleys are very near to each other. So this is V-belt drive. V-belt drive are made of fabric and cores molded in a rubber and covered with fabrics. Next point, advantages and disadvantages of the V-belt drive over a flat belt drive. Some advantages are like V-belt drive gives a compactness due to small distance between the centers of the pulleys, and second, the drive is positive because the slip between the belt and the pulley grooves is negligible. Third, since the V-belts are made endless and there is no joint trouble, therefore the drive is smooth. And fourth, it provides longer life, 3 to 5 years. Fourth, it can be easily installed and removed. The operation of the belt and the pulley is quiet. The belts have the ability to cushion the shock when the machines are started. The high velocity ratio may be obtained. So these are the some advantages over the V-belt drive, over the flat belt drive. And disadvantages like
The V-belt drive cannot be used with larger center distance. So it cannot be used for the larger distances. Second disadvantage, V-belts are not so durable as flat belts. The construction of the pulleys for V-belts is more complicated than pulleys for the flat belts. Next, since V-belts are subjected to certain amount of creep, therefore these are not suitable for the constant speed applications such as synchronous machines. The centrifugal tension prevents the use of V-belts at speed below 5 meter per second and above the 50 meter per second. So these are the some advantages and disadvantages of the V-belt drive over flat belt drive. Next drive is rope drive. The rope drives are widely used where a large amount of power is to be transmitted from one pulley to another pulley over a considerable distance. It may be noted that the use of the flat belts limited for the transmission of the moderated power from one pulley to another when the two pulleys are not more than 8 meters apart. If large amount of power are to be transmitted by the flat belt, then it would be results in excessive belt cross sections. It may be noted that the frictional grip in case of rope drives is more than that in the V-belt drive. The rope drives used for the following of two types. Okay, first one is fiber ropes, wire ropes. Second one is wire ropes. So the ropes for transmitting power are usually made from fibrous materials such as hemp, manila and cotton. Since the hemp and manila fibers are rough, therefore the ropes made from these fibers are not very flexible and possess poor mechanical properties. Next, the advantages of the fiber ropes drives. First advantage, they gives smooth and steady and quiet service. Second, they are little affected by outdoor conditions. Third, the shafts may be of strict alignment. The power may be taken off in any direction and in frictional parts of the whole amount. And fifth, last one is they give high mechanical efficiency. So the next drives is chain drive. Belt and rope drives that slipping may occur. So in belt and ropes, slipping may be occurs. In order to avoid that slipping, steel chains are used. The chains are made up of rigid links which are hinged together in order to provide the necessary flexibility for wrapping around the driving and driven wheels. The wheels have projecting teeth and fit into the corresponding recesses. So henceforth chain drives are very much useful. So the next point is advantages and disadvantages of the chain drive over a belt or rope drive. So first advantages are, as no slip takes place during chain drive, hence perfect velocity ratio is obtained. Next, the chain drives may be used when the distance between the shaft is less. Third, the chain drive gives high transmission efficiency, up to 98% it will give the transmission efficiency. Fourth, the chain drive gives less load on the shafts. And fifth, the chain drive has the ability of transmitting motion to the several shafts by one chain only. And disadvantage considering, first one is production cost of the chain is relatively high. Because of this production cost, it is disadvantage may be considered. And second, the chain drive needs
accurate mounting and careful maintenance. Third, the chain drive has velocity fluctuation, especially when unduly stretched. So these are the three disadvantages we are going to consider the chain drives. So these are the some basic considerations I am considered with this video. So at the same time I am attached another video from YouTube which is clears your doubts regarding transmission of the power. So you have to look these automated systems, means that some videos which are related to power transmission. So I hope you are going to enjoy. कौन से मैकेनिकल के तरीके हैं जिनसे कि आप पावर जो है एक जगह है दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ऐसे यदि हम बात करें केमिकल एंड फ्यूल यूनिट दैट इज ऑफ एनिमेशन, जो भी स्क्रू जैक हो या गियर ड्राइव हो, जो भी आपके पास ड्राइव मिलेगा, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्पेशली पावर ट्रांसमिशन यूनिट, जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये बेल्ट ड्राइव है, ठीक ना, दैट इज दी ओपन बेल्ट ड्राइव, दैट इज दी क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दिस इज दी गियर ड्राइव, ठीक ना, दिस इज दी चेन रोप। तो इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ एनिमेटेड पिक्चर जो है डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आने वाले वीडियो में हम मैथमेटिकली उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस इज दी अगेन पावर ट्रांसमिशन यूनिट, ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो ये आप देख पा रहे हो कि हाउ दिस इज प्रोसीडिंग। दीज आर अगेन टाइप्स ऑफ दी वेरियस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। वीडियोज को आप जो है एक्सप्लोर कीजिए और देखिए, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बहुत कम मिलेगा। ये बेल्ट ड्राइव का फर्दर एग्जांपल्स हैं, जो आपको हार्ले डेविडसन, जो आप बाइक यूज करते हैं हार्ले वगैरह की, वहां पे किस तरह से बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन है। तो ये बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन एक्चुअली हम दिखाए हैं एक पावर ट्रांसमिशन, जो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है, उसमें जो 4-5 हम डिस्कस करने वाले हैं आज, खास करके बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, फ्रिक्शनल डिवाइसेस। तो इसको हम एक एक करके जो है यहाँ कि किस तरह से बेल्ट ड्राइव जो है यहाँ पे काम करता है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मकसद यही था कि इसमें आपको हम कुछ एनिमेटेड पिक्चर के हेल्प से दिखाएं। रोप ड्राइव और जो बेल्ट ड्राइव है और एक चेन ड्राइव आएगा, तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। इन बेसिक डिफरेंस को हम वहां पे मैथमेटिक्स, चूंकि रोप ड्राइव आपके बेल्ट ड्राइव से काफी जो है इफेक्टिव होता है, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग भी होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू कैन ट्रांसमिट द पावर एट ए लार्ज डिस्टेंस। बेल्ट में या चेन में ये दिक्कत जाती है। दिस इज अगेन वाई रोप ड्राइव्स, क्योंकि रोप ड्राइव में आपको दैट इज आल्सो ए गुड एग्जांपल। ये आप देखते होंगे ट्रस यूनिट, या जो है ये रोपे आप देखते होंगे, दैट इज एग्जांपल। चेन ड्राइव में दिस इज दी स्प्रोकेट एंड दिस इज दी चेन। अब चेन का थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जस्ट जो है आप चेन का जो है कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमने दिखाने की कोशिश किया है। ये आप देखिए कैसे जो है चेन और स्प्रोकेट अटैच करते हैं। ये एलन की है, जिससे कि यहाँ पे स्क्रू टाइट कर दिए हम। ये की था आपका, और इसके ऊपर अब चेन हम अटैच कर रहे हैं। क्लिप से कर सकते हैं। चेन वर्क में जिसका हम देख रहे होंगे को अटैच करते हैं। दिस इज दी क्लिप। देख सकते हैं कि हम फिर चेन डिफरेंट है,
also one unit ही हम लोग एक सेपरेट यूनिट में सेपरेट जो है वीडियो में डिटेल में देखेंगे. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गियर ड्राइव. दिस इज द इंटरनल स्पेशल वीडियो जो है आपको मिलेगा जो है दैट यू कैन सी हियर हाउ इट इज लेकर सकते ना आपको जो है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेयरिंग. बेयरिंग भी जो है एक पावर ट्रांसमिशन यूनिट में आता है, ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं. आप देखिए क्लच जो है क्या है कैसे है. तो बेसिकली हमारा यहाँ पर्पज है एनिमेटेड. ये मल्टीपल डिस्क क्लच जो है उसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं. यहाँ पे पूरा वर्किंग एनिमेटेड जो है आपको इस तरह से आप जब जाएंगे तो कैम एंड फॉलोअर इज आल्सो वन यूनिट टू ट्रांसमिट दी पावर. किस तरह से एक जो है एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में पावर आप ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रहा है. दैट इज द मैकेनिकल वे एंड दैट इज द कैम्स एंड फॉलोअर. इसके अलावा आप ये ओल्डम्स कपलिंग वगैरह देखे होंगे, ठीक ना. दीज आर दी लिंक्स एंड मैकेनिज्म. This all power is being transmitted and converted from one kind of motion into another kind with the help of kinematic link and chain. This is also one example of kinematic link and chain. Again, this is the example of coupling. किस तरह से कपलिंग काम करता है ये आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख सकते हैं. अब जो है कुछ फ्रिक्शनल डिवाइसेस है जो हम लोग सेपरेटली जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है ना. दैट विल बी आवर लेक्चर नंबर 59. तो फिर करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. आएंगे देख सकते हैं. ट्रांसमिशन यूनिट जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि ये बेल्ट ड्राइव है, ठीक ना. दैट इज द ओपन बेल्ट ड्राइव, दैट इज द क्रॉस बेल्ट ड्राइव, दिस इज द गियर ड्राइव, ठीक ना. दिस इज द चेन रोप. तो इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ एनिमेटेड पिक्चर जो है डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आने वाले वीडियो में हम मैथमेटिकली उसको डिस्कस करेंगे. देखिए दिस इज दी अगेन पावर ट्रांसमिशन यूनिट ओपन ड्राइव, ठीक है. दिस इज दी कोनिकल बेल्ट ड्राइव, दिस इज दी फ्लैट बेल्ट ड्राइव, दिस इज दी कंपाउंड बेल्ट ड्राइव. जब भी आप इस अपने चैनल पे जाते हैं मैकेनिकल पंडित, तो इन सारे वीडियोज को आप जो है एक्सप्लोर कीजिए और देखिए, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बहुत कम मिलेगा. ये बेल्ट ड्राइव का फर्दर एग्जांपल्स हैं जो आपको हार्ले डेविडसन जो आप बाइक यूज करते हैं हार्ले वगैरह की, वहां पे किस तरह से बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन है. तो ये बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन एक्चुअली हम दिखाए हैं एक पावर ट्रांसमिशन जो मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन है उसमें जो 4-5 हम डिस्कस करने वाले हैं आज, खास करके बेल्ट ड्राइव, गियर ड्राइव, फ्रिक्शनल डिवाइसेस. तो इसको हम एक एक करके जो है यहाँ पे आप देखिए हमने डिस्कस किया है. दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ बेल्ट ड्राइव. किस तरह से बेल्ट ड्राइव जो है यहाँ पे काम करता है ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ना. तो ये हमारा मकसद यही था कि इसमें आपको हम कुछ एनिमेटेड पिक्चर के हेल्प से दिखाएं. रोप ड्राइव और जो बेल्ट ड्राइव है और एक चेन ड्राइव आएगा, तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है. इन बेसिक डिफरेंस को हम वहां पे मैथमेटिकल जब वीडियो बनाएंगे तो वहां पे ओके. थ्रू द एनिमेटेड वीडियो you clearly understood. I hope you understood the concept very clearly. Okay, so do the study properly, so because exam may announce at any time, so hope you enjoyed this video. Okay, thank you.